तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं नेहरू प्लेनेटेरियम। गाइज देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ नया होने वाला है और क्या कुछ यूनिक है यहाँ पर, किस चीज़ की जानकारी मिलती है। और गाइज यहाँ की टिकट 100 रुपये की है 2D और 200 की है 3D में। आप गाइज वो ले सकते हैं, वो लेना ज़रूरी है, उसके बगैर एंट्री नहीं हो सकती गाइज। तो चलते हैं गाइज अंदर, देखते हैं अंदर। तो गाइज ये है टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेते हैं। गाइज यहाँ पर लगाया हुआ है ये रॉकेट और ये है प्रज्ञान रोवर, देख सकते हैं आप गाइज। ये मून का सरफेस दिखाया गया गाइज। विक्रम लैंडर ये है गाइज अंतरिक्ष मास्टर RAP-D2। ये देखिए गाइज, इसमें काफ़ी सारे कैमरे लगे हुए हैं गाइज, आप देख सकते हैं। मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए गाइज, काफ़ी सारे गाइज इसमें कैमरे लगे हुए हैं। ये स्पाइरल गैलेक्सी है और ये NGC 253 एनोजर स्पाइरल। क्या आप गाइज इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं? व्हाई द नाइट इज़ डार्क? अगर जानते तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं गाइज। और ये हैं कुछ क्लॉक्स, ये देखिए गाइज, कैलिस्ट्रियल कैलकुलेटर है गाइज ये। और यहाँ पर गाइज जंतर मंतर के बारे में दिखाया गया है, जंतर मंतर कैसे वर्क करता है, ये देखिए गाइज। गाइज यहाँ पे लिखा है व्हाई आइंस्टाइन हैड टू री एक्सप्लेन ग्रेविटी, आप पढ़ सकते हैं गाइज यहाँ पर। कैन ग्रेविटी चेंजेस बिहेवियर ऑफ लाइट, ये देखिए गाइज, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ग्रेविटी ऑफ लेंसेज, डॉपलर इफेक्ट दिखाया गया है गाइज। पर यहाँ पे कुछ वर्क नहीं कर रहा है गाइज, सब कुछ ख़राब हो गया है। इधर भी एक दिखाया हुआ था, ये भी वर्क नहीं कर रहा है गाइज, ये भी ख़राब हो रखा है गाइज। ये है रेट्रोग्रेड मोशन, आप देख सकते हैं। अर्थ मार्स के बारे में बताया गया है गाइज। ये है हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स के बारे में, आप देख सकते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइज, कोई साइंस का स्टूडेंट हो वो समझाए मुझे कि क्या मतलब है इन चीज़ों का। कमेंट्स में बताएं गाइज जो साइंस के स्टूडेंट है कि क्या क्या है ये। हम पे तो है ही नो, हम पे तो है ही नो। यहाँ पर ये गाइज कुछ लगा हुआ है बट वर्क नहीं कर रहा है कुछ भी गाइज। ये किसी साइंटिस्ट की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर, आप कमेंट्स में बताएं ये कौन है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं गाइज मेरे मन में आप सबसे पूछने के लिए, तो कमेंट्स करते रहें गाइज। कितनी सारी लेयर्स हैं ये सारी की सारी लेयर्स हैं जो इन रियल टाइम में हैं। ये मून की लेयर्स हैं, इधर लिखा हुआ भी है। और इसी तरीके से है गाइज सब कुछ। जर्नी विद लाइट बियॉन्ड द रीचेस, देख सकते हैं आप गाइज। लाइट टेल्स द स्टोरीज। तो गाइज इसके अंदर हम जाके देखेंगे 2D या 3D मूवी, इसके बारे में बता रखा है पूरा का पूरा कि यहाँ पर ये होने वाला है, हमारे स्पेस में ये है, हर चीज़ के बारे में दिखाया गया है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं, बैठ गए हैं आके अंदर हॉल के अंदर। सारी की सारी चेयर्स खाली पड़ी हुई हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों। मूवी देखते हैं, ऊपर की तरफ मूवी चलेगी। पहला एक्सपीरियंस है गाइस मेरा ये। कुछ इस तरीके का इस प्रोजेक्टर लगा हुआ है और यहाँ पर चलती है फिल्म। अभी जब फिल्म स्टार्ट होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। Welcome to the planetarium.
stars. This is in the form of a bear, the Great Bear or Saptarishi Mandal. If we join these two stars of the Great Bear and follow them towards the north, we reach the pole star, Polaris or Dhruv. Pole star is located in another constellation known as Ursa Minor or Little Bear. Now these are the three tail stars of Great Bear. If we join these three stars in an arc and extend it, we come to this bright star, Arcturus or Swati. More than 400 years ago, a middle-aged professor of mathematics and astronomy, who also happened to be a genius, took his first look at the sky through a telescope he had built by hand. Like almost everyone who ever lived, Galileo Galilei wondered about all he saw in the night sky. If only he could get a better view of the stars and the moon. Recently, spyglasses had been invented to magnify things in the distance, such as ships. Galileo designed a much stronger spyglass and turned it upward. Today we have built larger telescopes that can see thousands of times farther than Galileo's. This image was taken by one of our most remarkable telescopes. It's not on Earth though, it's in space, where the view is not hampered by clouds, pollution or the atmosphere. The Hubble Space Telescope. Through it, we've seen things in the universe that are breathtaking. Because of our technology, we understand a lot more than Galileo could. But there remain great questions. How did the universe begin? What is it made of? How big is it? How many stars are there? What is the future of the universe? Scientists believe they have solved some of these questions, but some they haven't yet. The universe is the greatest of all mysteries, and the answers that will unlock its secrets await new discoveries, perhaps by future scientists watching this. It is vast. It stretches as far as we can see in every direction. It is a place of bitter cold and blazing fire. It is beautiful. What exactly is the universe? As far as we know today, it encompasses everything that exists, from tiny atoms to the whole Earth, to the sun and other planets, to the trillions of stars and the billions of galaxies. The universe is all things everywhere. Vishwamitra in India, Ptolemy in Greece, Aryabhat in India, Copernicus in Poland, and Galileo in Italy. We are not sure how the universe came into existence. Some believe that it was created in the remote past, and others say that it has always been around. Present-day science estimates that the universe is about 14 billion years old, and suggests that it exploded into being in a big... According to this theory, after expanding and cooling for millions of years of its infancy, the universe entered the equivalent of its early childhood. When they exploded, those elements were flung out into the extreme coldness of interstellar space. The blast of these supernovae also triggered the formation of new stars, a second generation.
Some of these galaxies are spiral-shaped, some elliptical, and another stake irregular shaped, sometimes a result of colliding galaxies. Then science proved that our planet and other planets actually revolve around our sun. Today, we know that the sun itself is but one star. Shock waves from the explosion of the dying star triggered the formation of the solar system. Smaller, leftover bits of matter became dwarf planets like Pluto, asteroids, and comets. 400 million years later, the Earth had appeared. After another 300 million years, the atmosphere and the oceans had covered Earth. Another 500 million years passed and some primitive forms of life appeared, such as blue-green algae. Zodiacal constellations. Together, they form a belt running across the sky. The sun, the moon, and the planets appear to travel through the belt of the zodiac. Right overhead, we find the famous zodiac constellation Leo the Lion. One of the brightest stars, Regulus at the front pole, is actually 4 stars. At any given time, you can see about 3,000 stars with your naked eyes. A few very bright, some dim, lots of stars barely visible. There are just a small fraction of the 400 billion stars in our Milky Way galaxy. To express the vastness of our universe, we use the term light year, the distance light can travel in 1 year. Our solar system is 300 light years from the center of the Milky Way galaxy. One great question fascinates us. Is there other life out there? Some skywatchers exclusively search for extraterrestrial life. As biologist and author Julian Huxley has said, there may be other beings in this vast universe endowed with reason, purpose, and aspirations, but we know nothing of them. So far as our knowledge goes, the human mind and personality are unique and constitute the highest product yet achieved by the cosmos. In coming centuries, the climate on Earth may change drastically. The continents which are drifting apart may one day collide with each other, destroying old mountains and creating new ones where none existed before. A huge asteroid could hit the Earth, as happened in the age of the dinosaurs. Some stars may die in the neighborhood, and some new ones may be born. Giant, engulfing the Earth and beyond. In the past, some astronomers theorized that our expanding universe might eventually slow down, halt, and begin to collapse. But that theory may be in question because of the recent discovery of what astronomers call dark energy and dark matter. We don't know exactly what they are, but we know they make up a large part of the universe, and the discovery suggests that the universe is not just expanding but accelerating.